Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of your 7.3 NCERT book, right? And in the last video guys, I have told you about the questions and the concepts of 7.2 and today I'm going to start 7.3. Right, so in 7.3 of your coordinate geometry, we'll study about the area of triangle. Area of triangle. Now it is a very general question कि मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपन कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 से 7 से आप इसमें नया क्या पढ़ाने वाले हो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया होने वाला है अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली पढ़ा है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट राइट बट हियर विल डू सम डिफरेंट थिंग जस्ट मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस मेक अ ट्रायंगल and since we are studying the coordinate geometry we'll find the area of triangle by using the coordinates of this triangle whatever I have made. So just write it down A B C on the vertex of this triangle and write the coordinate. Let the coordinate of this triangle of this vertex is x1 y1 and suppose it is x2 y2 and it is x3 y3. Since this chapter is coordinate geometry, so whatever the things we are studying will be related to a coordinate, right? Coordinate of the points, coordinate of the shapes, right? So here we are going to find out the area of triangle by using the coordinates of this triangle, right? तो अब ये coordinates में क्या ये vertex जो है A, B and C इनके मेरे को coordinates given है which is x1, y1, x2, y2 and x3, y3 and हम क्या करने वाले हैं? We are going to find out the area of this triangle. So this will be area of triangle ABC will be equals to just write down the formula हाफ तो कहीं खत्म नहीं होता हाफ वैसा ही रहेगा हमने हाफ लिखा फिर हम क्या करेंगे विल फॉलो द साइक्लिक ऑर्डर कैसे अपन को लर्न करना है देखिए अगर ये साइक्लिक ऑर्डर अपन लिखते हैं तो पहले 1 आता है फिर 2 आता है फिर क्या आता है 3 आता है 3 के बाद वापस से 1 आता है I'll use the same order I'll write x1 1 के बाद क्या आएगा 2 then 3 बट हमको ब्रैकेट के बाहर x1 लिखना है और ब्रैकेट के अंदर में y लिखना है ठीक है तो x1 y2 माइनस ऑफ y3 उसके बाद हम लिखेंगे प्लस x1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे x2 आएगा और 2 के बाद क्या आता है 3 देन 1 फिर अपन प्लस साइन यूज करेंगे फिर x2 के बाद क्या आएगा x3 आएगा 3 के बाद क्या आता है 1 और ये 2 सो गाइज आई गेस इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लर्न नहीं होगा ठीक है तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे द मेन थिंग इज कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैम 7.3 में तो 7.3 के क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट तो कि भाई आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके ट्राइंगल के और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का है ना और दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई आपको कोई एक वैल्यू आपको एरिया गिवन हो है ना आपको एरिया गिवन हो और कोऑर्डिनेट्स में से कोई चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए ठीक है तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है आपके बुक में एनसीईआरटी में 7.3 में तो अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लीजिए लर्न कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं 7.3 question number 1 I'm starting with the very basic question no, the question is normally find the area of the triangle we need to find area of the triangle ठीक है and what is given I'm taking part 2 of it ठीक है it is -5 -1 vertex are given the coordinate of vertex are given 3 comma -5 and 5 comma 2 so vertices are given as this so let it be as x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and suppose it is my vertex A it is B and it is C so the area of triangle ABC will be half पहले आप फॉर्मूले को जरूर लिखें x1 y2 minus of y3 then plus of x2 y3 minus of y1 after that x3 y1 minus of y2 just put all the values over here it will give you minus of 5 y2 is minus of 5 and y3 is 2 plus of x2 is 3 y3 is 2 and y1 is minus of 1 plus x3 is 5 y1 is -1 and y2 is -5 which will become +5 okay
So just simplify this whole term. It is minus 5, it is minus of 7, plus of 3, it is 2 plus, it is 2 plus 1, right? So it will be 3, and then 5, and it is minus 1 plus 5 will be 4. So guys, it is nothing but 1 by 2. 5 sevens are 35, and 3 threes are 9, and 5 fours are 20. So just add all the terms and we'll find the answer. So it will be, आप देख रहे हैं कि 35 plus of 29. 9 and 4 14, and 1 it will be 64 by 2, right? It will be 64 by 2. So it is coming out as 32. तो 32 के बगल में जरूर से आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट. वन मोर थिंग गाइस, आई वांट टू टेल यू दैट सपोज कभी ऐसा कुछ वर्टाइसेस आपको गिवन है कि आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा है, तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है आंसर. सपोज ऐसा कुछ रहता है, कैलकुलेट करते हो नेगेटिव आ जाता, तो आपको कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं लिखना है. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा. कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखना यहाँ पे एक मॉड का साइन भी लगा होगा. ठीक है, एनसीईआरटी में आई डोंट नो दिया है कि नहीं, बट आपके और भी किसी कभी हो सकता है किसी बुक में मॉड का साइन दिखेगा. तो ये मॉड बस क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट योर आंसर विल बी पॉजिटिव एनी टाइम, राइट? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. वेरी बेसिक क्वेश्चन. आई हैव जस्ट यूज्ड दैट फॉर्मूला. I have put it all the values and I have found out the answer, right? Let's have another question. Question number 2. Question number 2 is, um, I'm giving with the vertices of triangle, and I need to find something. So the question is, in each of the following find the value of k. Find k, and vertices are given as 7 comma minus 2. This is the first question of your 7.3. Question number 2's first question. 7 minus 2, then 5 comma 1, and then 3 comma minus of k. I need to find out the value of k. And the condition behind this, अब तो ऐसे जनरली थोड़ी ना फाइंड आउट हो जाएगा कि हाँ आपको के फाइंड आउट करने के लिए बोला भाई और बस अपन के फाइंड आउट कर लिए. तो कुछ तो और चीज मेरे को गिवन होनी चाहिए ना, तभी तो अपन के फाइंड आउट करेंगे. Yes, the things are given. पहला बोला हुआ है कि if the points are collinear, if the points are collinear, ये जो गिवन पॉइंट्स है, इफ दे विल बी कोलिनियर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. अब मुझे बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, सपोज दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी, एंड दिस इज माय पॉइंट सी, एंड सपोज दे आर कोलिनियर, तो टेल मी गाइस, विल दे फॉर्म एनी ट्रायंगल? अगर वो तीनों एक ही लाइन में है, तो क्या वो ट्रायंगल बना सकते हैं? टेल मी. बिल्कुल नहीं. आपको पता है कि टू मेक अ ट्राइंगल आई नीड 2 पॉइंट्स लाइक दिस, एंड एक जो तीसरा पॉइंट होगा वो उसके लीनियर पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वो कहीं और होना चाहिए. ठीक है, तभी जाकर के क्या बनेगा? आपका ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, तो हमने बता दिया भाई कि भाई ये ट्राइंगल तो नहीं बना सकता. तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो दे कैन नॉट मेक एनी ट्राइंगल, राइट? एंड इफ दे कैन नॉट मेक एनी ट्राइंगल, देन द एरिया of triangle ABC will be equals to 0. Why? Because the three collinear points cannot make a triangle. Okay, so I'm using the same formula again. Half x1 y2 minus of y3 plus of x2 y3 minus of y1 plus of x3 y1 minus of y2, and this is equals to 0. So guys, it is nothing but x1 y1, it is x2 y2, and it is x3 y3. Just put all the values over here. इस 1 by 2 को तो आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो वो 0 हो जाएगा पहले ही. x1 की वैल्यू इज 7, y2 की वैल्यू इज 1, माइनस ऑफ y3 की वैल्यू इज माइनस के, तो इट विल बी प्लस के. ओके, अब क्या करेंगे? अपन सिर्फ सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे. और x2 की वैल्यू कितनी है? आपकी 5 है. y3 कितना है? माइनस ऑफ के माइनस ऑफ y1. y1 कितना है भाई? इट इज -2, तो ये हो जाएगा +2. प्लस ऑफ x3 is 3, y1 is minus of 2, and y2 is minus of 1. Just check all the values, are they correct or not? और अगर ये करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कर लेते हैं भाई. देख लीजिए, 7 - 2 है, 5 1 है.
x1 है और ये y2 माइनस ऑफ y3 है, ठीक है ना, y2 माइनस ऑफ y3, ठीक तो लग रहा है मेरे को। ओके, अब चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। y2 में मैंने रखा 1, y3 में माइनस ऑफ k करेक्ट है, y3 में मैंने रखा माइनस ऑफ k एंड y1 में रखा मैंने माइनस ऑफ 2 तो प्लस 2 हो गया, y1 इज माइनस ऑफ 2 एंड y2 इज माइनस ऑफ 1। ओके ठीक है, एकदम परफेक्ट। x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 3। अब देखिए इट विल बी 7 प्लस 7k माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ 10 एंड दिस इज, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो गाइज इट विल बिकम 7 एंड 10 विल बी 17 एंड 17 माइनस ऑफ 9, 17 माइनस ऑफ 9 विल गिव यू 8। तो यहाँ से आ गया 8 एंड ये आ गया आपका प्लस 7k और माइनस ऑफ 5k, इट विल बी प्लस ऑफ 2k is equals to 0. Now you can see that I can transfer your value 8 to the right hand side. So 2k will be equals to minus of 8, sorry. Excuse me. Actually, I'm suffering from heavy cold. That's why it's creating problem. So it is 2k is equals to minus of 8 and k is coming out as minus of 4. So this is my answer, guys. This is how you can find out the value of k. तो जब भी आपको वर्टाइसेस गिवन रहेंगे और वहां पे k जैसा यहाँ पे हमको अननोन था, राइट, वैसे कुछ अगर अननोन रहेगा तो आपको एडिशनल कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, जैसे ये इन्फॉर्मेशन। ओके, जस्ट नोट, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं अपन बहुत ही जल्दी से। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी मिले। ओके, अब काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और पिक कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बिफोर क्वेश्चन नंबर 3 आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। सपोज आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना, और आपको ये चारों जितने भी इसके वर्टेक्स हैं इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और आपको बोला कि इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन है भी आपके एनसीईआरटी में शायद, ठीक। तो कैसे करेंगे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक अ डिविजन लाइक दिस। आपने दो ट्राइंगल बना लिया, एक ट्राइंगल है आपका ये वाला और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये वाला। तो आप क्या कीजिए, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालिए, सपोज इट इज A1। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालिए, सपोज इट इज A2। फिर आप A1 प्लस A2 कर देंगे तो आपको पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं कई सारे बुक में, आपके एनसीईआरटी में भी है, तो आप बिल्कुल उसको यूज कीजिएगा बनाने के लिए। मैं आप लोग के साथ में डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 of your 7.3 NCERT book is find the area of the triangle। मुझे area of triangle find out करना है, what is given more, uh, formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are। okay, आपको triangle के vertices given है, just wait a minute, very bad diagram। अपन ने यहाँ पे एक triangle बनाया और triangle के vertices are given। it is given as 0, -1। हम random लिख रहे हैं यहाँ पे। it is given as 2, 1 and it is given as 0, 3। I need to find out the area of triangle which can be found by you, which can be formed by joining the midpoints। तो suppose करते हैं ये आपका A है, ये आपका B है and it is your C। Suppose midpoint of AB is E, BC is D and AC is F। And if I'll join these points, you can see I'm again getting a triangle, right? And I need to find out the area of this triangle। Okay, so very interesting question and not at all difficult। तो सबसे पहली बात है, आप सबको मिड पॉइंट का कंसेप्ट पता ही है, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछा है कि भाई आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो निकालना ही है, ये जो आपका DEF है उसको, ठीक है। उसके लिए अलावा आपको यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। इसका मतलब है एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल ABC। यू नीड टू फाइंड दिस रेशियो। ओके, सो लेट्स डू फटाफट। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया दैट योर DE एंड F, ठीक है,
मैंने थोड़ा सीक्वेंस गलत ले लिया, मुझे पहले डी यहाँ लेना चाहिए था, ठीक है। दिस शुड बी डी, दिस शुड बी ई एंड दिस शुड बी एफ. So your D, E and F are what? These are the midpoints. And midpoints तो आपको बहुत आसानी से निकल सकता है. अगर आपके पास में x1, y1 है और यहाँ पे आपके पास में x2, y2 है, and suppose if you want to find out the midpoint of this line, तो कैसे find out करते थे अपन? x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. So I'm using the same concept over here and I'm finding out the coordinates of D, E and F. तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 plus 2 by 2 it will give you 1 and minus 1 plus 1 divided by 2 तो कितना हो जाएगा आपका 0. ओके, कितना आ गया आपका 0. ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे e को फाइंड आउट. 2 plus 0 by 2 it will give you 1 and 3 plus 1 by 2 it will give you 2. ओके, ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स है इनको ऐड करके मैं डिवाइडेड बाय 2 कर रही हूँ. फिर f के कोऑर्डिनेट्स देखिए 0 plus 0 by 2 will give you 0 and 3 minus of 1 by 2. So 2 by 2 will give you 1. So guys, this is how we have found out the coordinates of D, E and F. Now, if D, E and F, D is 1, 0, E is coming out as 1, 2 and F is 0, 1. Now this time guys, it is my x1, y1, it is my x2, y2 and it is my x3, y3. I'm doing my first job. I'm finding out the area of triangle which have been formed by joining the midpoints of the given triangle, right? So the area of DEF, area of triangle DEF will be equals to half. Use the formula x1 then y2 minus of y3 plus of x2. x2 के बाद क्या आएगा y3 minus of y1, right? And then x3 sorry, x3 के बाद क्या आएगा y1 minus of y2. देखिए यहाँ पे बस आप वैल्यूज पुट करने में कोई मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो फिर आंसर गलत हो सकता है. ये 1/2 हो गया, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1. तो ये कितना आ रहा है देखिए 2/2 and it is coming out as 1 square unit, right? अब देखिए ये आ गया आपका आंसर. But this is the first answer, which is area of triangle DEF. One more thing I need to do, which is find out the ratio of this triangle with the given triangle. It means you need to find out the area of ABC also. So A is given as 0, -1, B is given as 2, 1 and C is given as 0, 3. तो आप फटाफट उसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 तो जल्दी से ही लिख लेना है हमको. तो ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2 और ये हो गया आपका x3, y3. बस फॉर्मूले में पुट कीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. So it will be 1/2 x1 y2 minus of y3 plus x2 y3 minus of y1. तो ये +1 हो गया plus of x3, then x3 के बाद क्या आएगा y1 minus of y2. x3 के बाद 1 and 2 है ना, y1 सॉरी y1 minus 1 है then y2 ऐसा. तो आपने देखा कि भाई इट इज 1/2, ये वाला टर्म तो 0 है और ये वाला टर्म भी 0 है ना. एंड दिस विल बी 2 into 3 and 1 कितना हो गया 4. सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. इट इज कमिंग आउट एज 4 square unit. नाउ द सेकेंड टास्क इज रेशियो. सो द रेशियो will be equals to area of DEF upon area of ABC. So it is coming out as 1/4 and this is my answer. यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट नहीं लिखेंगे. So guys, this is all about your 7.3 and मेरे को पता है कि आप लोग को ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान है. आप ये सारे क्वेश्चंस बनाइए. आपके एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बनाइए. आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. Do like my video, share my video and subscribe this channel if you're very new to it. Thank you for watching this video guys.
We'll meet in the next lecture with the questions of 7.4. Thank you.